Hello students, good morning all. This is me Dr. Koresh. Welcome you all to this session. In this session, we are going to discuss some important aspect of the Koshal movement. As we know, every year the Odisha Public Service Commission in its main examination is asking some questions from the internal security of the Odisha part. So in this year Opsc main examinations, we have encountered two numbers of questions with respect to the internal security of the Odisha. One is your Koshal movement, another is your structure of the WODC, that is Western Odisha Development Council. So understanding the nature of the question, in this particular lecture, we have picked a burning topic, that is the Koshal movement. So be watchful till the end of the video. So let's get started. So before going to the main topic, so we should have some knowledge regarding the State Reorganization Act and what Article 3 of the Indian Constitution says. ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ India got independence in the year 1947 and it implemented the spirit of the constitution in the year 1950. ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଥିଲା କି ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ କେମିତି ଗୋଟେ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ସ୍ମଲର ୟୁନିଟ୍ସକେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, ଯେମିତିକି we can have a better efficiency in administration. That's why ଆମେ ବହୁତ ସାରା କମିଟିକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ 1948ରେ there was a committee that is known as SK Dhar committee, right? In the 1949 another is JVP committee. So ଏଇ ଦୁଇଟା କମିଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା. That state must be carved out from this mainland on the basis of language. So language has been a major concern or major thing that is to be considered while forming a new state, right? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଫଜଲ ଅଲି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ in the year 1954. Finally ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍କେ ଧର କମିଟି, ଜେପିବି କମିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଫଜଲ ଅଲି କମିଟି, so accepting the recommendations from this committee, the first state was created on the basis of language is Andhra Pradesh. Please remember it. Again, ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଅଛି, ବିକଜ वी आर गेटिंग यूनिफाइड amidst the diversity. So मोर डिमांड होता कि लैंग्वेज को लेकिन स्टेट तैयारी करने. That's why in the year 1956 the government of India passed the State Reorganization Act, or it is known as SRA Act of 1956, right? That's why आमको से 7th Constitutional Amendment Act pass करने पड़ता. So basing upon that recommendations of the commissions, we have carved out 14 states and 6 union territories in the year 1956. आमे सेतले 14टा राज्य और 6टा केंद्र शासित अंचल, दैट इज यूनियन टेरिटरी, आमे कार्व आउट करथिले फ्रॉम दिस मेन इंडियन लैंड. सो आमे केमिति आमे तो मन इच्छा करि परिबानी ये 14 स्टेट तयारी करथिले. सो वी आर receiving the spirit to form new states from the Article 3 of the Constitution. So Article 3 of the Constitution जोटा कि relate करे formation of new states. So आमे तार देखिए what is the formation of new states. So देखो तो सही टाइम 14 states थिला, 6 union territory थिला. Nowadays we have 18 states and the 8 union territories. As the time passes, the demand for creation of more states has been increasing. So let's look what Article 3 says. So Article 3 is basically related to the 4 important aspects. So IFIDAA. You should please remember this abbreviation. So Article 3 says Article 3 is basically relating with the formation of the new state. Very important formations. Second is increase the area of any state, diminish the area of any state, because we can increase the area, we can diminish the area
Third, it alter the boundaries of any states or alter the name of any state. So this feather principle you should have to remember. So before going to make any state or diminish or alter the name or alter the boundaries of any state, we should have a prior recommendations from the president, right? So this recommendation has to be placed before any house of the parliament. So the parliament passes this bill and it's sent to the whole state of the whole legislative assemblies of the state in the India. If it is getting ratified by more than 50% of this state legislative assembly, then the bill is getting converted to a act. Three important thing. So three important things are here. It requires prior recommendations or prior approval of the president. Second, only the parliament can exercise the formation of the new state. So no legislative assembly is being involved in this process, right? So this must be carried out in a very time bound manner. We have some time period. Within that period we have to complete this process. So dear students, please remember this. So ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେସିସରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍ସ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ହୁଡ଼ର ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଲଦାଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଟା ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ସେଥିଟାକୁ ହରିତ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ହରିତ ପ୍ରଦେଶ, ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ବିକଜ ଏଥିରେ ଜାତ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକଙ୍କର ନମ୍ବର୍ସ ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ ଜାତ କମ୍ୟୁନିଟି ଆର୍ କ୍ୟାପଚରିଂ the power heavily compared to the eastern part of the Uttar Pradesh. We have Purbanchal जो थी कि भोजपुरी लैंग्वेज बहुत सारा लोक कहते। सो लैंग्वेज एनादर इज योर कम्युनिटी, से नुआ स्टेट डिमांड कले। सेमिति बोडोलैंड आप गोरखालैंड एम सब डिमांड कले। आप देखिए महाराष्ट्र गोटे जगह अच्छी गोटे ईस्टर्न पार्ट दैट इज दी सौराष्ट्र सॉरी वेस्टर्न पार्ट दैट इज सौराष्ट्र रीजन। ये सौराष्ट्र रीजन टा लेस डेवलप कहीं ड्यू टू द आपाथी फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो से मैंने सौराष्ट्र वाला गोटे नुआ से मैंने गोटे स्टेट मान्यता पाइबा डिमांड कले। सेमती राजस्थान मरुप्रदेश रिसेंटली आम जो तेलंगाना वाज बाइफर्केटेड फ्रॉम द आंध्र प्रदेश करते। अगेन आंध्र प्रदेश गोटे रॉयल सीमा भी से डिमांड कर। सो देयर आर मेनी डिमांड्स दैट आर बीइंग कमिंग आउट फ्रॉम मेनी एरियाज ऑफ आवर कंट्री। सो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। सो गोरखालैंड इन वेस्ट बेंगल, बोडोलैंड इन असम, सौराष्ट्र इन गुजरात, सॉरी नॉट इट इज गुजरात, विदर्भ रीजन इन महाराष्ट्र, मरु प्रदेश इन राजस्थान, नागालैंड इन नागालैंड। सो आम स्टेट रे कोशल रीजन। सो कोशल रीजन गुड़ा आम जो ओडिशा रोचे, ओडिशार वेस्टर्न पार्ट जोटा कि 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करुच्ची, सेटा को आम कोशल रीजन्स कोशल्स बोली कहुचे। से कोशल्स माने गोटे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज दैट इज कोशली लैंग्वेज को लेकिन गोटे नुआ स्टेट से डिमांड कर। सो व्हाई बिकज कहीं आम नुआ स्टेट को डिमांड कर। सो ये गोटे जनरलाइज पर्पस से डिस्कसन्स करी। फर्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जब आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए विदिन ए स्टेट देयर आर मेनी कल्चर्स, देयर आर मेनी बैटल्स फॉट विदिन ए स्टेट, राइट। सो से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को यूज करके आम गोटे बाइफर्केशंस करने डिमांड करते। जमीक तमिलनाडु रे को बाइफर्केशंस डिमांड कराऊँ कहीं गोटे रीजन अच्छी तमिल स्पीकिंग रीजन्स जोटा कांचीपुरम एरिया रही। आ गोटे रीजन रोचे आपंकर तांजोर मदुराई रीजन। ये रीजन दुईटा हिस्टोरिकाली से डिस्टिंक्ट, दैट्स व्हाई से गोटे डिमांड कर दुईटा अलग अलग स्टेट। एंड दिज डायलेक्ट इश्यू विदिन ए स्टेट देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, राइट। जमी आम ओडिशा रे गोटे सम्बलपुरी लैंग्वेज रोचे, गोटे आपंकर कोस्टाल एरिया लैंग्वेज रोचे। सो द पीपुल आर मोर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। सो से निज लैंग्वेज को इंटर रखापी भी
नुआ स्टेटहुड मान्यता पाउछन्ति। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे गोटे बड़ राज्य अच्छी तार सेंटर तर ये रोचे तार हेडक्वार्टर रोचे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परकुलेट द गुड गवर्नेंस। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड रू भी आम से बहुत सारा रिजन्स रे कराउची आमर स्टेटहुड मान्यता दिया कराउची। राइट जो महाराष्ट्र एत बड़ स्टेट रोचे से महाराष्ट्र रिजन रो जो ईस्टर्न पार्ट रो विदर्भ रिजन से विदर्भ रिजन को भी एडमिनिस्ट्रेशन करने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने से आम नुआ स्टेट मान्यता से डिमांड करुँच। एनादर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इन द स्टेट जो रिजन इधर बेसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रोचे बेसी इकोनॉमिक लोकंकर प्रॉस्पेरिटीज रोचे से जगह से लोक मैंने नुआ स्टेटहुड मान्यता से डिमांड करुँच। राइट सोशियो कल्चरल वी हैव सीन केमिति जात कम्युनिटी भोजपुरी स्पीकिंग लैंग्वेज एम सोशियो कल्चरली दे आर मोर इंटैक्ट से नुआ स्टेटहुड मान्यता कर। एनादर पावर पॉलिटिक्स दैट इज जात कम्युनिटी माने केमिति कर। सो वी हैव ब्रॉड एस्पेक्ट रिगार्डिंग दी ब्रॉडर एस्पेक्ट रिगार्डिंग दी फॉर्मेशन ऑफ दी और डिमांड ऑफ द न्यू स्टेट्स दैट इज हिस्टोरिकल डायलेक्ट इशू और लैंग्वेज इशू। एनादर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड इकोनॉमिक कंडीशंस socio-cultural conditions and politics conditions. So this is generalized perception. So we are confining ourselves to the coastal formation, coastal state formations. As we know, the coastal area, that is the western part of the Odisha, they have a distinct language, they have a distinct dialect, because as we speak in Odia in the coastal region, they do not speak Odia because it is this Odia language is this coastal language is quite different from the Odia language. It is mixed with some Hindi language or with some Chhattisgarh language. So the coastal language has a distinct position in the western part of the Odisha. So my question is the coastal language is central to the emergence of the movement? Yes, it is the main thing or it is the central piece to the emergence of the movement. As we know, I have already told there are 10 districts which comprises the coastal state, that is the upper part is Sundargarh, Jharsuguda, Devgarh, Bargarh, Sambalpur, Sonpur, Bauth, Balangir, Kalahandi and Nuapada. As you know, the Sundargarh is rich with minerals. Jharsuguda also with minerals. So as we have seen, the economic status of this region is high, but it is undermined. Right? So there are 10 districts and this 10 district comprises half of the Odisha. Means we have 4 crore populations, 2 crore populations are residing in this area of the Odisha. So the demand for new states comprising the 10 districts is not new. This demand has been there from the year 1960 70s. This demand has been rising. The main thing or the main intention to create this a new state, the coastal state, is only the basis of the coastal language, which is very distinct to this region. This region is demanding to include the coastal language in the 8th schedule of the constitutions, Indian constitutions. As we know, in Indian constitution, the 8th schedule says or deals with the languages. Right? 8th schedule deals with the languages. So nowadays, we have आज का डेट आम पाखे 22 numbers of languages जोटा कि 8 schedule रे रही जोटा कि आपनकर 344 सब क्लोज 1 एंड 351 को भितर से आर्टिकल्स भितर से रोचे. सो मेन इंटेंशन हमर हला कि कोस्टल लैंग्वेज को हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रो शेड्यूल भितर जगह देया पे.
যেতବେଳେ ইলেকশনস আসে সেতବେଳେ এই মুভমেন্টটা আমার জোরদার हुए সেই টাইমে এই মুভমেন্ট যেতବେଳେ চালিଥିଲା ইন द 2003 ইম্পর্টাଣ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ 93rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ବଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଥିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର୍ସ ସିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 38 numbers of 38 more numbers of languages to be included in the 8th schedule of the constitutions ସାଇନିକାଲିରେ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ so right so the committee was the ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର and 93rd constitutional amendment act ପରେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ जोटाकि से समय 22 numbers of language थिला आ से recommendations करते 38 numbers of language to be included in the 8th schedule of the constitutions thankfully thanks to the central government in the 2014 जीए की ओडिया आम लैंग्वेज को गोटे क्लासिकल लैंग्वेज रो मान्यता देइथिले so this is the generality of the or the basic idea behind the emergence of the Koshal movement. So what are the basic causes? तार मूल कारण गुड़ा सब कौन कौन the basic causes has a broader ideology or broader perspective, that is the regional disparity. So this is our Odisha. Suppose within this Odisha we have many regional disparities. आमर विभिन्न अंचल मध्य असमानता देखा जाए. No similarities with respect to your social status, with respect to your economic status, with respect to your political status or cultural status. So we have a distinct observations of the culture, social life in different parts of the Odisha. Some parts are very poorly developed, that is the KVK region, Kalandi Balangir, Koraput regions, Nuapada regions, they are very underdeveloped. And they are also very backwardness. Backwardness is added by the increased drought, increased failure in agriculture, increased left-wing extremism. ये सब कारण एमन को underdevelop और backwardness भितर तक रखी. Besides that, it is not well drained by rivers. As we know, in the topography of Odisha, the western part forms the rolling uplands. Mostly agriculture get failure. So the underdevelopment and the backwardness holds the basis of the regional disparities. Second, the poverty. As we know, out of the 10 districts, the KVK region constitute more than 60% of the BPL section of the society. That's right. This KVK region is also known as hunger belt of Odisha. आज जो hunger belt को आउजी एथि लोक मान को देखा आउजी जेतु to escape from the hunger situation there is finding of the forced migration and bonded labor. Third is the fourth is the industrialization and the environmental degradations. Right? So industrialization is confining to this region, but the true test is not being percolated to this region. It is diverted to the coastal area. So, and there is also environmental degradations. As more numbers of people they belong to the SC and ST category. You might have known the Kutia issue and the hegemony by the Andhra Pradesh, the Niyamgiri issue where the Lanjigarh project of the Vedanta got failed, the Hirakud issue you might have known because Hirakud reservoir तैयारी होता बहुत सारा लोक से डिस्प्लेस होता बहुत सारा गाँव से जलबंदी होता दे स्टिल दे आर फाइटिंग टू गेट द राइट्स स्टिल इट इज बहुत सारा फार्मर्स
allegations करती हीराकुद reserves water maximum water instead of utilizing it for agriculture purpose, it is being diverted towards the industrial purpose. এই সব জিনিস আমার କୋଶଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଆମର ସେ ବାର୍ଥ କରୁଛି। Another thing, the low literacy compared to the coastal, the western Odisha has a low literacy rate. So these are the some causes that leads to the emergence of the coastal movement. Once the coastal movement started, in what way it get percolated, or in what way it was imbibed within the people of the 10 district that comprises the coastal state. First one is the, in that 10 district, they have a very strong cultural ties. They say a common dialect. They observe many festivals, those are distinct in that region, which is totally different from the coastal regions. For example, observations of the Nuakhai, जोटा कि आप 10 डिस्ट्रिक्ट लोक मैंने पालन करते। सेकेंड, द राइज ऑफ प्रिंट मीडिया। आम जो कोस्टल मूवमेंट को आम जो एनालाइज करते ड्यू टू द हेजिमनी ऑफ द कोस्टल लैंग्वेज ओवर द वेस्टर्न, वी हैव नो एनी सॉलिड डॉक्यूमेंट्स। से आम संबलपुरी हितैषणी, दैट इज अ मैगजीन, जो मैगजीन रे संबलपुरी हितैषणी ए मैगजीन वाज देयर, जोटा को ए कोस्टली मूवमेंट रो से ट्रेसेस से करि पारि छि। जेतले वांस मूवमेंट स्टार्ट हला, थैंक से टाइम रे संबलपुर रे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से एस्टाब्लिश कराइतला, जो रेडियो स्टेशन रे कोस्टली लैंग्वेज रे सब न्यूज, सब प्रकार आपनकर एंटरटेनमेंट थिंग्स सब हमरो ब्रॉडकास्ट कराइतला। सो इट अगेन साउड द सीड ऑफ द regionalism feelings among the 10 districts. The last, then the Rangavati songs, right, by the Mitrabhanu Gauntia, the Sabyasachi's, the producer Sabyasachi's movie, Sabyasachi's Panda's movie Bhuka, एगुड़ा जोटा कि तांकर सेंटिमेंट्स, तांकर इमोशंस को पिक्चराइज करथिला, एंड इट राइट। सेकेंड, बर्तन जीते हलधर नाग जी पद्मश्री अवार्ड, तांकर लिखा तांकर गीत कोस्टल लैंग्वेज रे थिला। सो इट अगेन जोटा कि से लोक से एरे लोक मान को मन गोटे रीजनलिज्म, गोटे सेंटिमेंटल्स एस्टाब्लिश करथिला। फाइनली इन संबलपुर यूनिवर्सिटी रे संबलपुरी स्टडी, संबलपुरी लैंग्वेज को स्टडी को मध्य यूनिवर्सिटी पास करछि, अनुमति देछि। एही सब कारण जोगु many professors, many intellect peoples are telling the coastal movement is rising. So cultural ties, the rise of print media, establishment of the All India Radio at Sambalpur, Rangavati songs, your Bhukha movies, emergence of the Haldar Nag and his poems, and the Sambalpur studies at Sambalpur universities. So in order to maintain a integrity or one state, the government of the Odisha has taken some of important initiative, जोटा कि इनिशिएटिव ना जोटा कि रीजनल डिस्पैरिटीज को कम कर पारिबो। जदि रीजनल डिस्पैरिटी कम रही गला, देन ए जो ग्रोइंग रेजिस्टेंस जो रहउची फॉर कोस्टल सेटा मिनिमाइज ही पारिबो। सो द गवर्नमेंट कौन कला, गोटे वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल्स तैयारी करथिला, जोटा कि ए वर्ष ओपीएससी मेन परीक्षा रे आस्थिला। सो वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल्स गोटे वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट एक्ट 2000 रे पास कराइतला, जहा को रेकमेंड करथिले पीसी घड़ई कमिटी इन 1994। यार द चीफ एम इज टू एक्सीलरेट द डेवलपमेंट process in the 10 district. So the once development process chala, there is increase infrastructure, increase road connectivity. So the road connectivity infrastructure bodla, then there no decrease or no left wing extremism.
right? So development is a holistic process. So overall development ପାଇଁ ଆମ ସେଥିପାଇଁ WODC Western Odisha Development Councils को ଆମେ establish କରିଥିଲେ. Second, so in every year the budgetary allocations or provisions towards this region has been rising. So that's how we have created a fund, that is the BRGA fund, that is the backyard region grant fund. এই ফন্ড বଳରେ ଆମେ Western Odisha regions ରେ many developmental work को ଆମେ accelerate କରୁଛନ୍ତି. Second, the ensuring better medical facilities. ଏବେ ଆପଣ ଯେତେ ବି medical doctors, any doctors of recruitment होଛନ୍ତି, the government is preferring to place them in the Western Odisha regions, to the inaccessible regions, so that the inequalities can be minimized. As we know, there is a program, that is aspirational districts program, the GI tag concept, the climate resilient agriculture, because the Western Odisha रे हमर जनरल ड्रॉट कंडीशंस बहुत हुए. सो सेही टाइम रे हमें से क्लाइमेट को केमिति खाप खुआई चली परला बेले हमें एग्रीकल्चर सेमति को मॉडर्न मशीनरी इक्विपमेंट्स हमें यूटिलाइज करूछंती. सो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को मध्ये इंपोर्टेंस दिया होछ एलोंग विथ द इरिगेशन फैसिलिटीज. देन द स्वाइमान स्कीम. सो मालकानगिरी एरिया जो कटक रोची, चित्रकोंडा एरिया रोची, जो डेवलपिंग एक्सट्रीमिज्म बहुत अलार्मिंग स्टेज रोची, से एरिया को आमे गवर्नेंस देवा दरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर देवा दरकार, ब्रिज रहा दरकार, मोराल पॉलिसीज को आमे इनश्योर करवा दरकार. ये सब जिन स्वाइमान स्कीम्स अंडर आमर आसुची. फाइनली द रिसेंटली लॉन्च द 5T एंड द मो सरकार स्कीम्स, जोटा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को जोटा से रिफ्लेक्ट करुच्ची. सो यहाँ को आम एत सब जिन नहीं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव नौ, सो दैट इट कैन मिनिमाइज और इट कैन रिड्यूस द गैप बिटवीन द टू रिजन्स. सो द गैप रिड्यूस हो गला, देन आपनकर कौन ये जो राइजिंग लेवल ऑफ द मूवमेंट से बहुत मात्रा रिड्यूस हो. नेक्स्ट कमिंग टू द सम आर्गुमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट. जदि किसी स्मॉलर स्टेट आम तैयारी कर लाइक कोशल, लाइक योर गोरखालैंड, ये सब हेल्ले आम कौन सब तार प्रोज सब कौन कौन रोटे बड़ स्टेट रे गोटे शासन करने गोटे छोट स्टेट शासन करने बहुत इजी, इट इज कन्वीनियंट. सो द पावर कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, राइट. सेकेंड, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द एथनिसिटी. the छोट स्टेट रोले स्मॉल सेक्शंस ऑफ पीपल डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप से रहिले, देन से माने बेटर वी फीलिंग्स ताको भीतर रहिबो, से बेटर डेवलपमेंट वर्क रे पार्टिसिपेट कोइ परिबो. सो द प्रॉब्लम्स ऑफ एथनिसिटी कैन बी मिनिमाइज्ड. अनदर इज स्ट्रांग फेडरलिज्म को हम एंश्योर करि परिबा. केमिति? सपोज ए स्टेट इज देयर, दैट इज मणिपुर, ए स्टेट इज देयर, दैट इज यूपी. यू जस्ट लुक द साइज, one has a gigantic size and another is a very small tiny size. So जितना हमें जानते हैं, जितना हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो राज्यसभा हमें चूज करती, से टाइम रे हमें किछि किछि डिलिमिटेशंस कमिशन कन्स्टिट्यूएंसी हमें करथांती. तो जो स्टेट रो मैक्सिमम पॉपुलेशंस थिबो से स्टेट रे हमें तांकर एमपी सीट्स राज्यसभा में अधिक थिबो और लोकसभा में भी अधिक थिबो. सो जितना स्मॉलर स्टेट्स हे जो, सो there is no any distinctions गोटे बड़ स्टेट गोटे स्मॉल स्टेट भितर किसी डिस्टिंक्शन रहिबो, समस्त इक्वल रिप्रेजेंटेशंस रहिबो आर दी पार्लियामेंट. सो पोलराइजेशंस हबनी. so that in that way we can ensure a strong federalism concept. Another thing, no more fear of the balkanizations. balkanizations माने गोटे बड़ स्टेट को भांगी छोट छोट यूनिट कर दवा, जेटा बाल्कानाइजेशन प्रोसेस कहती, राइट. से बाल्कानाइजेशन प्रोसेसटा जो छोट छोट स्टेट ऑलरेडी थी तो सेटा को आम बाल्कानाइजेशन प्रोसेस करि परिबा नाही. सो देयर इज नो मोर फियर फॉर बाल्कानाइजेशन. so these are the some arguments regarding the formation of the smaller states. Then we will find arguments against the creation of small state. small state हेले हमर कोन सब असुविधा हो, सेमिति किछि कहै जाय परिबोनी कि जदि स्मॉल स्टेट ले तार रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो. You may find the very classic example of the
उत्तराखंड जोटा कि उत्तर प्रदेश बाइफर्केट है उत्तर प्रदेश बाइफर्केट है उत्तराखंड इकोनॉमिक स्टेटस से भी भल हो पारे राइट एनादर इज छत्तीसगढ़ एमपी रु जिते भी आम बाइफर्केट है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक स्टेटस इज स्टिल और इट इज नॉट well remarked, right? So no guaranteed rapid economic growth. Hegemony of the dominant community, caste, tribe about the power structure. যদি গোটে এথনিক গ্রুপ গোটে পর্টিকুলার এথনিক গ্রুপ যদি রহিলে সেটি মনোপলি হব, সেটি হেজিমনি হব, সেটি ডাইনাস্টি চালিব। সো এটা গোটে এনাদর নেগেটিভ আসপেক্ট অফ দি ক্রিएशन অফ দি স্মল স্টেটস। যদি স্মল স্টেট রহিলা তাଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରହିବ। ସ୍ମଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଯଦି ରହିଲା ଲେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏମଏଲଏଜ୍ ରହିବେ। ସୋ ଯଦି ୱାନ୍ସ ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ତାର ସପୋଜ 30ଟା ଏମଏଲଏ ରହିଛି, ସପୋଜ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି ଯଦି ସବୁ 20 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ସେ ନେଇ ଆସୁଛି ତାର ସବୁବେଳେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ହେବ, ସେ ଫୁଲ୍ ମେଜରିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ। ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଚଏସ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। So larger political assembly thibo सेठी wide variety of views रहिबो। अगेन जदि स्मॉल स्टेट रहिला तो पावर टा बहुत अल्प लोकंकर सेंट्रलाइज हबो, जोटा कि ऑटोक्रेटिक रूल मध्ये चलिबो और दे कैन इवन अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशंस और डेमोक्रेसी। सो एतरे भी रिस्क प्रॉब्लम रहिबो। सेकेंड जदि नुआ नुआ स्टेट तैयारी कले देन देयर इज इंक्रीज इंटरस्टेट वाटर पावर बाउंड्री डिस्प्यूट रहिबो। जेमती हम छत्तीसगढ़ ओडिशा भीतर रहउची वाटर इश्यू रहउची, बहुत सारा स्टेट इन पावर बाउंड्री इश्यू मध्ये रहउची। बाउंड्री इश्यू बर्तन इंडिया हमर ओडिशा छत्तीसगढ़ ओडिशा आंध्र प्रदेश भीतर मध्ये बेले हमर वेस्ट बेंगल सहित भी रहउची। सो ए प्रॉब्लम छोट छोट स्टेट जदि तैयारी हो देन ए प्रॉब्लम रो क्वांटम टा अधिक बढ़ी जाओ। अगेन सो फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर न्यू कैपिटल गोटे नुआ स्टेट न्यू कैपिटल फॉर्मेशन यदि ह्यूमन रिसोर्स दरकार, टेक्नोलॉजी दरकार, यदि मैन पावर दरकार, फाइनेंशियल रिसोर्सेस दरकार, से सब स्टेट एक्सचेकर रू सब ड्रेन हम। जमती कि आपको बर्तमान चलती अमरावती स्टेट जो हो तार क्रिएशंस ह्यूज फंडिंग्स आर रिक्वायर्ड, राइट? सेमती डिस्मल पास्ट एक आम जो देखिए जो आम झारखंड को आम नुआ राज्य तैयारी करते सेमती देखा गले तार किसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज सेमती है, करप्शंस इज हाई, रेट टैपिज्म इज हाई, राइट? ये सब जिन केमती किसी आखि दृश्य आमर परिवर्तन से आसेनी। सो डिस्मल पास्ट एक आम देखी। सो दीज आर द सम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स। So being a civil service aspirant, so we must have a middle path. We will not more or we will not tilt more towards positive arguments or negative arguments. So we must have a middle path. So we have to ensure the better governance. So better governance can be ensured through the utilization or through the introduction of the new technology. So technology must be included in every sphere of your life, in agriculture, in medical facilities, in constructions, in infrastructure development. ये सब जिनस टेक्नोलॉजी दरकार। सेकेंड फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो माने भी आम पावर पोजिशन से रोचंती से अकाउंटेबल कथा और रेस्पॉन्सिबल कथा टू द पीपल। पीपल मस्ट हैव नॉलेज और पीपल मस्ट हैव दैट मच ऑफ लिटरेट सो दैट कि पावर पोजिशंस तांकर लाइफ को एक्सेप्ट न करू, से माने एब्सोल्यूट पावर एंजॉय न करंतु। this they do have some senses towards the welfare of the people। से आम गोटे स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट जदि आम जिला परिषद रोच कलेक्टर्स रोच आम रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फेस करा दरकार। एलोंग विथ आम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज फंक्शंस को आम वाइडेन करा दरकार, सो दैट दे हैव चेक्स एंड बैलेंसेस इन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस that increase political stabilities। Finally, it is high time to revisit the State Reorganization Act। The second
state reorganization act ଆମର demand କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ more than 38 numbers of new regions they are demanding to get into a to demanding for a new states। so ସମସ୍ତଙ୍କୁ new states ର ଦେଇପାରିବାରେ ଆମେ demand। so again the government of India should think to revisit the state reorganization act। so with this I am concluding my session। if you have truly enjoyed this video, then please press the subscribe button, press the like button, and press the bell icon so that when I am posting a new video like this, you can get an early notifications। so until the next video, stay safe, stay indoor, have a good day, God bless।